to now. The Soumya who अभी हाँ तेरी 2 गेम में लगातार 18 चल लाल दिखा दे +4 है और ये तेरे पे चल ना। So hi everyone, welcome back to the another video. It's been a long time. मुझे तो खुद भी नहीं पता इस वीडियो का टाइटल क्या होगा. Let's figure it out because today my brother said to me that Soumya, जो करना है अभी करना है. There is no perfect time. So I thought कि I have to, and this is my technically 5th take. I've never been this uncomfortable in front of camera, recording myself and being so clueless. I miss myself. I miss my earlier self who used to just record random things, embarrassing things, and don't used to feel hesitate. A lot has been changed. I am 19 now. I really want to record my journey from 19 to 20. So this is my first step. Let's see. मुझे नहीं लगता ये edit हो पाएगा because I have already recorded like hundreds of video of myself same like doing same thing but not. मतलब कुछ को तो मैंने edit भी कर दिया and I didn't had the courage to post it. Like a lot has changed from the time I have last posted to now. The Soumya who stands here has lots of self-doubt. Not gonna lie. बहुत सारे self doubts है, बहुत सारे questions हैं, and as I'm growing up, I feel like I'm not enough. So this is a personal self-help growth journey. Before I turn 20, I have some promises with myself which I want to do. I want to tick them. So I just want to record my journey. I'm in a university now. University में हर तरीके के लोग होते हैं, and looking at them, मैं अपने आप से बस डाउट कर पाती हूँ. Hi everyone, it's really fun recording like this. क्या मेरी मम्मा मुझे डांटेगी फ्रिज को ऐसे खुली करके ऐसे रिकॉर्डिंग करने के लिए? हाँ, पर मैं क्या करूँगी? Yes, it's cinematic. अभी we are just about to present, like we are in round 2, तो हमको भी पहले present करना है स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर. उसके बाद अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो हम राउंड 3 में जाते हैं जहाँ पे वी विल कंप्लीट विद द रेस्ट. जो पैच एक लाइक पैच ऑफ क्लासेस बनी हुई हैं वहाँ पे हम फर्स्ट कंप्लीट करें, उसके बाद हम राउंड 3. एंड अभी एक टीम प्रेजेंट कर रही है. मोस्ट लाइकली हम इसके बाद जस्ट उनके बाद या इसके बाद हो सकते हैं. And me and Harshita just practice presentation. One of our team member is practicing, like he's improving our interface and website. So let's go. बहुत सारे लोग बैठ के चले जा चुके हैं and मेरे अब दिल so this is she's looking pretty. This is kind of everything we're going to show. Hi everyone, finally मैं घर वापस आ चुकी हूँ hackathon से, and I really want to share what I've learned from hackathon. I don't have some list कि मैं क्या सीखी हूँ, but I want it to be unscripted and I want to really talk to myself. So let's begin, ठीक है, without wasting our time. So first thing I learned in hackathon is that एक hackathon doesn't decide कि your idea was a good idea or a bad idea, because जो मेरे कॉलेज में, जो मेरी यूनि में हैकेथॉन हुआ था उसमें हम फर्स्ट राउंड में जस्ट 1 स्कोर से रह गए थे. सो आई थॉट कि शिट, मेरा आइडिया ही बहुत बचकाना है, ये है वो है. एंड मोमेंट में एज आई मस्ट हैव एडेड द वीडियो, आगे अगर नहीं ऐड किया तो मैं अभी ऐड कर दूँगी. यूनिवर्स लिसन टू यू, जस्ट हियर मी हाउ टू हाउ लाइक ओके. सो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो फॉर फर्स्ट ईयर्स के लिए
ओनली फॉर फर्स्ट ईयर्स के लिए एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था. एंड उस हैकाथॉन में मैं और मेरी टीम जस्ट एक नंबर से रह गए थे. एंड हैकाथॉन इज लाइव फ्रॉम लास्ट 3 days. Listen to it. Last 3 days. कल फाइनल डे है ऑफ showing up your website, your app, your final product basically. ठीक है. एंड जस्ट एट द एंड मोमेंट एक टीम ने ड्रॉप आउट कर दिया. एंड जस्ट इमेजिन हु गॉट द अपॉर्चुनिटी. Us get to go. Could you just... This hackathon means a lot to me. Like, we did give a lot, our all, me and my team. And इससे पहले कल, when I was in a call with my friend, my sweetheart, my college sweetheart, her name is Harshita. I was in crying mode, saying कि universe, if you're listening to me, please give us revenge. Please listen to us. Give us some signal that you're listening to us. And did it. Yeah. And अभी I have to do chemistry का assignment, CSS का assignment, and hackathon. Let's go. Yay! कि how last moment में एक टीम पूरा back off कर देती है, तो फिर we get the chance to get into it, and everyone in the department said कि best PPT है, and like so good, so damn, so creative, and the idea was so good. No one has brought something like that. It's just कि हमारा टेक स्टैक इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हम थर्ड राउंड में नहीं जा पाए. बट या लाइक वी वर जस्ट 1-2 नंबर से आगे पीछे. इट वॉज काइंड ऑफ कूल. So it just made me realize कि our life is like this. You know, you can see blue, I can still see red and yellow. Like, just because you feel it's blue, it doesn't necessary to be blue. And ये मैं बोल रही हूँ because मेरे को ये realize होता है, not just by hackathon, but because of the conflict I have with peoples right now, and all the clashes I generally had within this 2-3 weeks. इससे I just realize कि yes, all you can do sometimes is cry it out. Crying is, for me, it's a personal best solution sometimes, because हमेशा तुम्हें हर चीज़ का आंसर पता होना ज़रूरी नहीं है. एंड जिन चीज़ों के लिए मैं लास्ट 2-3 वीक से रो रही थी, मुझे अभी तक उनके आंसर्स नहीं पता है. बट नाउ आई एम comfortable with those uncomfortable things, and I've just realized that life is just a spectrum. If you see red, I might be seeing green, so it's okay. Let's not blame game. Okay, I'm not preaching something which I'm not practicing. I'm actually practicing this. I journal it, I talk to myself. So just hope somewhere I remind you, if something going wrong, just remember life is like a spectrum. It's not necessary that you're 100% right. Finally, experiment done. मेहनत लगती है, and I
got the best girls. सब लोग वहाँ पे हैं